Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन रो थर्ड टर्म डिफ्यूजन विषय पढ़ा व्हिच इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मास डिफ्यूजन को आम डिस्क्राइब करि एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मास व्हिच इज रिजल्टिंग इन फ्रॉम रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन मॉलिक्यूल जो गैस रे अछि सेमानकर इतस्ततः गतिविधि द्वारा ये जो ट्रांसपोर्ट हुए तांकर ऑब्वियसली मॉलिक्यूल सहित मास इज एसोसिएटेड सो मॉलिक्यूल यदि मूव कला त माने मास भी मूव करूची सो देयरबाय इट इज रिजल्टिंग इन from the random molecular motion of your gas molecules. So it is taking place whenever there is different molecular concentration in different parts. Obviously गोटे जगह रे जदि बेसी concentration अछि माने बेसी खुंदी खुंदी कि molecules माने अछंती तो सेही जगह रो कोन हबो जो जगह रे टिके फांका अछि molecule संख्या कम अछि सेही जगह को molecule माने मूव करिवे ओके फॉर मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम सो ये जिनस एठी कहूची डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन जदि डिफरेंट पार्ट्स रे रहूची ऑफ द गैस दैट इज known as your concentration gradient. So in such case the more denser region will lose more molecules to the regions of lower density okay in order to bring the equilibrium state jemti कहली and this phenomenon is called your diffusion okay now this phenomenon of diffusion can be explained on the basis of kinetic theory considering the transport of mass across a given plane जेमती आमे पूर्व दुईटा केस देखिला गोटे थिला तमरा विस्कोसिटी आ गोटे थिला तमरा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी बा सेटा थिला कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जोटा आमे पाउथिला ओके सो एटा आसिला थर्ड केस व्हिच इज द डिफ्यूजन तो ठीक सही बढ़िया हमें फिगर को लक्ष्य करो एठी हमें तीनटा लेयर नेला ओके वी हैव कंसीडर्ड a mass of a gas which is moving in parallel layers between the planes AB and CD okay AB गोटे plane CD गोटे plane आउ LM होची intermediate plane ए दुई plane रो मझिरे अछि such that it is situated at a distance equal to lambda which is the mean free path okay suppose एबे हमें concentration जदि देखिबा that is the number of molecules per unit volume ताले it is increasing in the vertical direction जेमती जेमती हमें A B रू C D आड़ को जिबा concentration माने number of molecules per unit volume बढ़ी बढ़ी जिवो ओके अच्छा intermediate layer रे suppose हमें एठी नीचू concentration n आउ A B पई आसीबो देखिबा चेक करिबा n minus lambda dn by dz हबो CD by n plus lambda dn by dz habo okay so concentration above this intermediate plane intermediate layer LM is more as compared to the concentration below this layer LM okay so in order to bring the equilibrium molecule mane ebe tolo adku move karibe okay the molecules of the gas will be moved or due to thermal agitation they will move from the plane CD upper plane रो AB आड़को मूव करिवे क्रॉसिंग द इंटरमीडिएट प्लेन LM केते बेलो जाय ए जिंसटा हबो जेते बेलो जाय कंसंट्रेशन सबु जगह रे एवरी रीजन रे समान न होईची व्हिच इज नोन एज योर इक्विलिब्रियम ए फेनोमेनन को हमें डिफ्यूजन बोली की कहिता व्हिच मे बी कंसीडर्ड एज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास okay and here as the molecules are moving in all possible direction
So due to thermal agitation it may be suppose that आम जमी प्रीवियस केस मानक देखुला जे एठी मध्य देख एठी हमर एक्स एक्सिस आउ जेड एक्सिस जोटा देखाई सहित एठी एपटे वाई एक्सिस रहिबो तेणु प्रत्येक एक्सिस आड़ को तीन भाग रु भागे मॉलिक्यूल मूव करेंगे सपोज एक्स एक्सिस आड़ को ये आम जब देखला ताले एक्स सहित नेगेटिव एक्स एसोसिएटेड ये एक्स डैश आसब सो केवल जदि पॉजिटिव एक्स को आम कनसीडर कला ताहले एबे हिजिबो 6 भाग रु भागे ओके 1/6 of the molecules will move towards the positive x axis से जिनसटा एठी लिखाई जे it may be supposed that 1/3 of the molecules are moving in each of the three direction which are parallel to the Cartesian coordinate axis that is x y and z axis so that average जदि बाहर करिबा एबे then 1/6 of the molecules will move parallel to any one axis in one particular direction okay अच्छा एबे जेमती कहूतली इंटरमीडिएट लेयर बा जो मझी लेयरटा अच्छी एल एम सपोज सेठी हमर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हे गला एन माने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम अच्छा एठी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जोटा क्रॉस करूची एल एम को इन अपवर्ड और डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड सेटा ही जीवो एन सी बार बाय 6 ओके जोटा कि 1/6 ऑफ द मॉलिक्यूल से ही आसिला एटा ताले ए सी बारटा होची तमरो जो एवरेज वेलोसिटी ओके सो यार वैल्यू आसी थाए तमरो 8 kT by pi m रो स्क्वायर रूट अच्छा एबे ए रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration with distance माने it is nothing but your concentration gradient माने रखो concentration gradient माने rate of change of concentration per unit distance in upward direction which is perpendicular to the intermediate plane LM यार value हेबो dn by dz okay ताले एबे distance जेतु हमें नहीं जाइछु upper और lower plane रो from the intermediate plane is equal to your mean free path that is lambda ताले concentration at the upper plane CD यार value हेबो n plus lambda dn by dz similarly concentration at the lower plane AB हेजिबो n minus lambda dn by dz okay ताले number of molecules from the upper plane CD crossing the intermediate plane LM in downward direction per unit area per second हिजिबो एठी आसिला 1/6 c bar एठी n plus lambda dn by dz मन रख एटा जेहेतु नंबर सो नंबर सहित आम यार 1/6 c bar को आम मल्टीप्लाई करछु c bar जमती कहली एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन सिमिलरली number of molecules from the lower plane AB crossing the intermediate plane LM in upward direction per unit area per second हे similarly 1/6 c bar एबे हे जेतु AB अछि सो n minus lambda dn by dz ओके तेबे आमे जानिचु जे जो डिफ्यूजन रो कांसेप्ट आमे देखिला जे जो जगह रे कंसंट्रेशन बेसी अछि सेठू मॉलिक्यूल्स माने मूव करिवे जो आड़े कंसंट्रेशन कम अछि in order to maintain the इक्विलिब्रियम तेणु जोटा डाउनवर्ड जो क्रॉसिंग होची मॉलिक्यूल्स पई ताको आमे नेबा पॉजिटिव बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन रे कम कंसंट्रेशन अछि अपवर्ड रे बेसी अछि सो जोटा अपवर्ड कंसंट्रेशन रो जो ये मॉलिक्यूल रो मूवमेंट होची ताको आमे नेगेटिव नेबा ओके सो एबे नेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया of your intermediate plane LM per second या को आमे लिखि परिबा जेमति कहली डाउनवर्ड पई आमे नबा पॉजिटिव आउ अपवर्ड पई नेगेटिव नै जेजु एबे एथिरु आमे पाइला 1/3 c bar lambda dn by dz ओके सो एटा आसिला नेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटी गोटे प्रिंटिंग मिस्टेक स्मॉल प्रिंटिंग मिस्टेक एटा मॉलिक्यूल्स हबो ओके अच्छा सो एटा हमर नेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जोटा क्रॉस करूची इंटरमीडिएट प्लेन LM क्यू पर यूनिट एरिया पर सेकेंड एटा हमें पाइला ओके एबे हमर टास्क हैला कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन को बाहर करबा व्हिच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड टू द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट व्हिच इज dn by dz सो ए क्वांटिटी को हमें dn
बाय dz सहित डिवाइड करदे ताले तले ऊपर देख dn by dz अच्छी कैनसल आउट होगा कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन सपोज यार सिंबल आम ना कैपिटल D ताले इट कम्स आउट टू बी 1/3 c बार लैम्बडा ओके एबे तले ऊपर आम रो मल्टीप्लाई करदे where रो इज इक्वल टू mn which is density of gas ताले आम जाचु कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो ट्रांसपोर्ट फेनोमेना फर्स्ट केस आम देखुला फर्स्ट पार्ट यार वैल्यू आसला 1/3 रो c बार लैम्बडा ताले ताकू कंपेयर करवा जदि देन d इज इक्वल टू इटा बाय रो ओके सो एटा आसिला रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन एंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ओके बट हाउएवर ए रिलेशन टा जो आमे देखिला बिटवीन d एंड इटा it does not agree well with the experimental results for a gas okay so यार गोटे डिटेल एनालिसिस करा जाय कि टिके याकू करेक्शन करा गला okay the corrected value is d equal to f dash eta by rho एठी f dash इगला गोटे numerical factor whose value is nearly equal to 1.4 okay अच्छा now the values of density rho average speed c or c bar जोटा ऊपर आमे देखुतिला then molecular diameter sigma स्मॉल डी भी लिखा हुए सो देख ये दुईटा बही मु जेहेतु एडिट करके पेस्ट करी सो किछिटा नोटेशन टिके स्लाइट डिफरेंस रहिबो एका जिंस तापरे मीन फ्री पाथ लैम्बडा देन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इटा कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी माने थर्मल कंडक्टिविटी के एट एनटीपी माने नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर रे ता सहित specific heat capacity at constant volume CV for some of the important gases are given in the following table एठी देखो सबु जते क्वांटिटी जोटा अछि एटा को हमें SI यूनिट रे नीचु ओके द gases are like helium hydrogen nitrogen oxygen carbon dioxide and air which is the mixture of gases accordingly we are having the values of sigma rho c or c bar then lambda eta K and CV okay with the respective SI unit okay acha now finally let us see the effect of temperature and pressure on the coefficient of diffusion so देखो आमे जो mean free path lambda रो value एटा in terms of temperature and pressure एतिकी आसे ओके आमे यार value जानिछु केमती आसिला देखो मु कहि दउची 1 by √2 pi n स्मॉल डी स्क्वायर और एठी सिग्मा जेतु अछि सिग्मा स्क्वायर लिखली एठी जो स्मॉल n अछि दिस इज नथिंग बट कैपिटल N माने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम अच्छा आमे रिलेशन जानिछु PV equal to RT which is nothing but NKT ओके ताले एबे n by v रो वैल्यू केते हला n by v which is small n यार वैल्यू चेक करिवो आसीबो यार वैल्यूटा p by kt ओके सो p by kt आसीबो n by v और स्मॉल n रो वैल्यू जोटा कि आमे एठी पुट करिचु ओके सेकंड थिंग एवरेज वेलोसिटी जोटा अछि तार वैल्यू आमे जानिचु स्क्वायर रूट ऑफ 8 kt by pi m सो ये लैम्बडा आउ c रो वैल्यू आमे कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन जो पाइथिला आमे वैल्यू 1/3 c लैम्बडा ओके एतकी वैल्यू आमे पाइथिला से जगह रे आमे एठी पुट कर देला वैल्यू सो एठी देखो जणा पडुची जे ए जो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन d it is proportional to t to the power 3/2 and inversely proportional to p okay so the coefficient of diffusion or self diffusion is directly proportional to the 3/2 power of absolute temperature and inversely proportional to the pressure P okay so this is all about your diffusion or transport of mass. Thank you.